नमस्कार सर। दोस्तों, आज हम लीगल स्ट्रीम को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। आर्टिकल 14 वो फंडामेंटल राइट है, उसे राइट ऑफ इक्वलिटी भी बोलते हैं, राइट ऑफ पैरिटी भी बोलते हैं। तो वहीं से हम लोग आगे शुरू करते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, और इसको समझाने के लिए हमारे वकील साहब कलकत्ता हाईकोर्ट के मजूमदार साहब समझाएंगे क्या है। हम भी थोड़ा सा इनपुट देंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो ओवर टू यू मजूमदार साहब। जी सर। सर इसको ला सकते हैं स्क्रीन पे? हाँ हाँ, आप पढ़ो, स्क्रीन मत लेके आओ, अपने उसमें खोल करके वहां से पढ़ो ना। स्क्रीन में लाने की जरूरत है कि मैं ला दूं? ला देता हूँ, दैट इज बेटर, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, इक्विटी बिफोर लॉ, मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वलिटी करके पढ़ लिया था। अभी यहाँ पढ़ना है जी। आर्टिकल 14 of the Constitution of India. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India, protecting prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Professor Dicey, explaining the concept of legal equality as it operated in England, said, "With us, every official, from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes, is under the same responsibility for every act done without any legal justification as any other citizen." आगे पढ़ता हूँ सर. The phrase equality to the law finds a place in all written constitutions that guarantees fundamental rights. All citizens, irrespective of birth, religion, sex, or race, are equal before the law. That is to say that there shall not be any arbitrary discrimination between one citizen, a class of citizens, and another. All citizens shall, as human persons, be held equal before the law. All inhabitants of the Republic are assured equality before the laws. सर मैं कुछ अलग से बताऊं सर? हाँ हाँ, अरे जी. The Article 14 uses two expressions, equality before the law and equal protection of the law. Now, the first, equality before law, is of English origin, and the second, equal protection of the law, has been taken from the American Constitution. So, while the expressions both of them may seem identical, but equality before the law is somewhat written in a negative concept, implying the absence of any special privilege in favor of individuals. And equal protection of laws is more of a positive concept, implying equality of treatment in equal circumstances. The rule is that like should be treated alike and not unlike should be treated alike. But there are certain exceptions to the right of equality. So Article 361 provides that the President and the Governor shall not be answerable to any court for the exercise of powers and duties of their office. And the word any person in Article 14 makes the equal protection of laws available to any person, both citizens and non-citizens alike, and to natural persons as well as legal persons. So Article 14 permits classification, this is important, but prohibits class legislation. So उसमें एक बात हो सकती है ना, वो इसलिए भी हो सकता है कि since president and governors are the protector of the constitution, so they are immune to part and parcel of the constitution. They are not expected to break the law. Correct, sir. So likewise, CJI or judges, till they are in the chair, they cannot be prosecuted. So since they are part and parcel of the constitution, I'm not talking about the individual, but I'm talking about the post which they are holding. Till they are holding the post of that constitutional post,
तो उसमें फिर वो गड़बड़, they are not expected to break the law and they are not expected to act contrary to the constitution. करेक्ट सर. इसीलिए research- एक और चीज बोल रहे सर, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 does not mean all laws must be general in character. It does not mean the same laws should apply to all persons. Yes, yes, It yes. also does not mean that every law must have an universal application for all persons, and they are not by nature, attainment, or circumstances in the same position. जो आप उस दिन बोल रहे थे, in what position they are circumstanced, that is important. पिछले बार हम लोग सर डिस्कस कर रहे थे, in what position a person is circumstanced, then the law will apply accordingly based on how the person is situated or circumstanced. बस सर इतना ही बोलना था. That's why in every act there is one exception, in the sense, suppose suppose Custom Act is there. जी So जी in that Customs Act there is a provision under section 155 or something like that, where it says that any act done by the authorities under this act, that is considered as bona fide. So if something is wrong, suppose an accused is arrested by police and then he is acquitted by court, for that matter, that doesn't mean that the officer who has arrested him or officer who has prosecuted him or the trial court is liable for magistrate or judge who has given him a sentence will be prosecuted. correct sir. Because Correct sir. that exception is also there. So you cannot take somebody for a right कि नहीं नहीं तुमने मुझे गलत अरेस्ट किया था, ऐसा हुआ था वैसा जी हुआ जी था, जी. तो वहां पर भी That exception protection is article there for officials. लेकिन अगर सामने वाला बंदा कोई ऑर्डिनरी आदमी है और वो तुम्हारे को थप्पड़ मार दे और तुम भी थप्पड़ मार दो, तो दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूटिंग द लॉ मुकदमा चल सकता है. Because that officer was acting while discharging his duties. So prevention of any official from discharging his duties is a punishable offense. Yes. जी सर. बट उसमें क्या है, आईपीसी में 166 67 कुछ बोल रहा है कि if the action of that officer, whether he is a police officer or for that matter any officer under any act, अगर that is malified, means it is not in the discharge of the duty, वो कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, तो फिर फंस जाएगा वो. हाँ जी जी. तो that's why the High Court insists on malafide. कहीं भी मतलब हम लोग डालते हैं कोई तरह का allegation, so unless malafide is proved, the court will not take any cognizance of that matter or be seized of the matter. In nutshell, we can safely say that if a state government officer or for that matter a central government officer is acting under the power of any law, he is expected to perform the duties and act as per that law. So, correct, sir. If something is afterward found not as per law, then that officer is not responsible for the infringement of something. So, वो तो अपना काम कर रहा है ना, उसके लिए पैसा मिल रहा है ना, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है. जी. तो वो तो अपना पूरा रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के सामने लेकर के आता है, कोर्ट के सामने लेकर के आता है. अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ नहीं कोई गड़बड़ है तो ठीक है. Like that. आगे पढ़ो. Exactly, sir. Equal protection of law. इसको पढ़ें sir. Equal protection of law has been given in Article 14 of our Indian Constitution, which has been taken from Section 1 of the 14th Amendment Act of the Constitution of the United States. ये पहले भी बोल चुके हैं हम लोग. Meaning of equal protection of law here means that each person within the territory of India will get equal protection of laws. In Stephens College versus University of Delhi, the court held that the expression equal protection of laws is now being read as a positive obligation on the state to ensure equal protection of laws by bringing in necessary social and economic changes so that everyone may enjoy equal protection of their laws and nobody is denied such protection. If the state leaves the existing inequalities untouched by its laws,
it fails in its duty of providing equal protection of its laws to all persons. So the state will provide equal protection to all people of India who are citizens of India as well as non-citizens of India. Now coming to ये the आ गया exceptions principle. to the rule. जी सर, कुछ बोलेंगे सर आप? नहीं, कुछ नहीं. So ये पढ़ लो, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है. we will come to the underlying principle. The principle of equality is not the uniformity of treatment in all respects. It only means that all persons similarly circumstanced That's what you shall are be telling. treated alike, both in the privileges conferred and liabilities imposed by the laws. Equal law should be applied to all in the same situation, and there should be no discrimination between one person or another. Now, the rule of law. The rule of law embodied in ये जो है ना गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. G. So under Article 361, protection of the President and the Governors and Raj Pramukhs are provided. So under Article 361, Sub-Article 1, the President or the Governor or Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office, or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of these powers and duties, provided that the conduct of the president may be brought under review by any court, tribunal, or body appointed or designated by either house of the parliament for the investigation of the charge under Article 61. Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India or the government of a state. तो ये एक्सेप्शन यहाँ थोड़ा सा दिया गया है इसमें. Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India, means you can bring proceedings against government of India or government of state, but you cannot bring proceedings against president of India or governor of state. Because if somebody is feeling that his fundamental right is infringed or a particular act is not followed properly, then the state is responsible for that, no? He can approach the High Court under Yes. Article 226 of the Constitution of India or the Supreme Court under Article 31. 32, yes. 32, sorry. 32. Yes. So these are two provisions which any citizen can avail of. श्रीनिवास थिएटर में क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ो तो. In Srinivas Theatre versus State of Tamil Nadu, Justice Reddy has noted that equality before law is a dynamic concept having many facets. One of them there is that there shall be no privileged person or of class and name shall be above state law. ये भी क्या अंग्रेजी लिख रहा है यार, अजीब तमाशा. हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दिया. There shall be no privileged person or class होना चाहिए and name above the state law. A fact that there is obligation upon the state to bring about through the machinery of law a more equal society envisaged by the preamble and part 4th directive principles of state policy of the Indian Constitution would apply. Now the very important thing is coming. Now इसको पढ़ो, बराबर फंसेगा ये मामला. पढ़ो. Termination and prohibition of Article 14. Article 14 permits classification but prohibits class legislation. The equal protection of law guaranteed by Article 14 does not mean that all laws must be general in character. It does not mean that the same laws should apply to all persons. It does not mean that every law must have universal application for all persons who are not by nature, attainment, or circumstances in the same position. The varying need of different classes of persons often require separate treatment. From the very nature of society, there should be different places, and the legislature controls the policy and enacts laws in the best of interests of the safety and security of the state. In fact, identical amount to unequal circumstances would amount to inequality. Thus, a reasonable classification is permitted to develop this society. And
Article 14 forbids it forbids class legislation, but it does not forbid reasonable classification. This reasonable classification, however, must not be arbitrary, artificial, or evasive, but must be based on some real and substantial distinction, bearing a just and reasonable relation to the object sought to be achieved by the legislation. तो जो चीज हम लोग पहले भी एक बोले थे शुरुआत में, आइडेंटिकल अमाउंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस वुड अमाउंट टू इनइक्वालिटी. So circumstances are more important in certain cases. But where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply class legislation in that which makes an improper discrimination by conferring particular privileges upon a class of persons arbitrarily selected from a large number of persons, all of whom stand in the same relation to the privilege granted, that between whom and the persons not so favored. बहुत गड़बड़ इसमें किया है. No reasonable distinction or substantial difference can be found justifying the inclusion of one and the exclusion of the other from such privilege. जहाँ equal footing पे नहीं है, वहाँ there should be equality. So the courts will ensure that there is equality and no special treatment is given. But in certain cases, where a reasonable classification permits for special treatment for development of the society, there can be reasonable classification of laws, but it must not be arbitrary, artificial, or evasive. यही बोलना चाह रहा है. Article special provisions for women and children and SC, ST, and backward classes. Article 14. This question is often raised. So why are women, children, and SC, ST, and backward classes getting special privileges when Article 14 states that all persons are equal before the law? So Article 14 of the Indian Constitution says that all men are equal in the eye of law. No one can prevent the state from making any special provisions for women and children. For example, special seating arrangements for women in buses, trains, metros, trains is not unconstitutional. It was also held by the court that the reservation of seats for some women in colleges should be allowed. So according to Section 487 of the Indian Penal Code, adultery is considered as an offense when it is committed by men and is not considered an offense if committed by women. Thus, women cannot be prosecuted as abettors. It is clear that it makes special provision for women, which is valid. Under constitutional law, Article 15, Sub-Article 3, Section 437 of the CRPC 1973 restricts the release of an accused person guilty of a capital offense on bail, except women, children under the age of 16 years, or ill or infirm persons. ये एक छूट दिया गया. Restriction of an accused person for a capital offense on bail is there, except for women, children under the age of 16, or ill or infirm people. Then Choksi versus State of Rajasthan, the court has held that it is valid on the grounds to make special provision for women, and therefore it is protected under this article. Article 15, Sub-Article 4 has been inserted by the Constitution First Amendment Act 1951. This amendment has been changed in the Supreme Court case of Madras versus Champakam Dorai Rajan. In this case, the reservation of seats for the admission to state medical and engineering colleges was made on the ground of caste and religion. The court said that it was unconstitutional on the ground that it was based on a communal matter. Article 15, Sub-Article 4 was inserted in the Indian Constitution after the with an amendment having the aim to empower the government to make special provisions for the betterment of educationally and socially backward classes of citizens of India and the scheduled castes and scheduled tribes. The state made special provisions for the weaker sections such as SC, ST, and educationally and socially backward classes of citizens of India. But the meaning of scheduled castes means such castes, race or tribes or parts or groups within such castes, races or tribes as are deemed
under Article 341 to be scheduled castes for the purpose of this article. Of the Constitution under Article 341 provides Article additional 341 provides additional protection to the member of the scheduled castes having regard to the social, economical, educational backwardness from which they suffer because of their caste. Now, new concept of equality for the people, protection of the people of India. In the case of Air India versus Nargesh Mirza Regulation 46 of Indian Airlines Regulation provides an air hostess would retire from service upon attaining the age of 35 years or on marriage within 4 years of service or on first pregnancy, whichever found earlier. But Regulation 47 states that the managing director had the discretion to extend the age of retirement 1 year at a time beyond the age of retirement up to the age of 45 if, in his opinion, an air hostess was found medically fit. It was held by the court that an air hostess on the ground of pregnancy, termination of service, termination of air hostess on the ground of pregnancy was unreasonable and arbitrary. It was the violation of Article 14 of the Constitution of India. The regulation did not restrict marriage after 4 years, and if an air hostess, having fulfilled the condition, became pregnant, there was no ground why first pregnancy should stand in the way of her running in service. The court said that termination of service on pregnancy was manifestly unreasonable and arbitrary on the basis of this violation of there was violation of Article 14 of the Constitution. यही बोलना चाह रहा था कोर्ट. इन लोग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए थे एयर इंडिया वाले, तो उसमें शादी करने की इजाजत देते हो उसको और फिर बोलते हो नहीं तुमको प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्या मतलब है ये? इसीलिए कोर्ट बोल दिया कि दिस इज आर्बिट्ररी, मैनिफेस्टली अनरीजनेबल. John Valamatam versus Union of India, Section 118 of the Indian Succession Act, 1925. This speaks about this Indian Succession Act. It is for Christians, Court invalidated the prohibition of the right of a Christian to make a valid will for a religious or charitable purpose only if he made it at least 12 months before his death. The court observed the prescription of time and the application of the provision only to Christians having no nexus with the object of the law. फिर एक और केस बता रहा है, मतलब ये will बनाना होगा 12 months before his death, then only will the will be valid. But how will you come to know that कि वो कब मरने वाला है? ये तो बड़ा important question है. ये बहुत important question है, because nobody will come knocking and death will not come knocking and state that I am going to kill you after. Today I am alive, but tomorrow I may die in an accident. तो is it mandatory that कि ठीक है I should anticipate कि कल मेरा एक्सीडेंट होगा? नहीं, इसमें एक मकसद ये होगा कि that person already should make up his mind as early as possible to make valid any gift for religious or charitable purpose. इसका मतलब तो ये हुआ वकील साहब की जबरदस्ती जो है 18 years of age I should make a will. कि भाई ठीक है जो भी मेरी प्रॉपर्टी आज होगी या जो एक्वायर करूंगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहीं हो जाएगी, ऐसा करके बना के रखूं, बिकॉज़ नोबडी इज सर्टेन ऑफ व्हाट. No, I can sell that property also. हाँ जी, then I can sell that property. If there is an emergency, I may have to sell the property which I am holding even after making the will, so that will not have any effect in the eye of law. If I don't die and I acquire property afterwards? That is always there, sir. People do acquire property much later. So that property will also be that will. No, that if there is a codicil, then of course the changes can be made. But after that, if ये बड़ा peculiar है, लेकिन ये चीज 12 महीना का जो कैप लगा है before death, this is again difficult to comprehend.
In P. Rajanan versus State of Madras, the court said that there was district-wise distribution of seats in state medical colleges on the ground of proportion of population of a district to the total population of the state. In such cases, classification will be valid under Article 14, but there must be a relation between classification and the object sought to be achieved. Any one scheme of admission rules should be devised so as to select the best available talent for admission to medical colleges in the state. In reality, discrimination as a highly qualified candidate from one district may be rejected while a less qualified candidate from another district may be admitted would not be allowed. यही मतलब बोलना चाह रहा है. और कल मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो जेई का एग्जाम हुआ ना, मेन के लिए क्वालिफिकेशन है, मेन के लिए क्वालिफिकेशन है दैट इन 12th स्टैंडर्ड यू शुड सिक्योर 75% और अबव. तो जिन लोगों ने जेई में प्रीलिम में 95% ले लिया है, बट दे हैव नॉट सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा है, नथिंग डूइंग, द कंडीशन इज कंडीशन. If you have not secured 75% marks in the qualifying exams and you have secured even 99% or 100% JEE exams, you are not eligible to appear in main. So the condition is mandatory. You have to fulfill the condition. ये लोग क्या करते हैं कि जेई के इम्तिहान में पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और क्वालिफाइंग एग्जाम्स में ध्यान नहीं देते ना ये लोग. सर सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्योंकि जेई का सिलेबस कुछ और टाइप का है और 12 का कुछ सीबीएसई का और टाइप का है, तो दोनों का तालमेल रखना मुश्किल हो जाता है. This I have faced this problem in DS Nakara versus Union of India. The Supreme Court said that Rule 34 of the Central Services Pension Rules 1972 was unconstitutional on the ground that the classification made by it between pensioners retiring before a certain date and retiring after that date was not dependent upon the rational principle that it was arbitrary and that it infringed the Article 14 of the Constitution. The classification made by it between pensioners retiring before a certain date and retiring after that date was not dependent upon any rational principle, in the sense that if somebody is retiring on 31st December of a year, उसमें वही समस्या लगता है. 31st December of a year अगर उसका होता है और अगर कोई 1st जनवरी को करता है, रिटायर करता है, जो 1st जनवरी को रिटायर करता है, though he has not performed the क्या बोलते हैं ड्यूटीज और वर्क फॉर 1 month, बट उसको जो मतलब पेंशन है ना वो 31st दिसंबर से ही देंगे, ऐसा करके बोल रहा है. तो लेकिन एक कट ऑफ डेट तो होगा सर, लास्टली फिर एक कट ऑफ डेट होना चाहिए. इन्होंने ये क्या किया था कि मतलब ये जैसे मान लो हम लोगों का जो पेंशन होती है वो डीए एरियर के हिसाब से वो करते हैं ना. जी. कि अभी जैसे मान लीजिए जनवरी और जुलाई के महीने में 6 महीने में एक बार एरियर देता है ना, डीए एरियर देता है जी. तो अकॉर्डिंगली द पेंशन इज डिसाइडेड. और फॉर दैट मैटर सपोज पे कमीशन का रिपोर्ट है व्हिच इज टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st जनवरी, तो जो 31st को रिटायर हो रहा है वो तो बेचारा गया ना, बेचारा निकल जाएगा. हाँ निकल जाएगा. लेकिन जो 1st जनवरी को जो रिटायर हो रहा है, he is eligible for that. तो 1st जनवरी को दो he has not performed duty, because जिस दिन रिटायर होता है आदमी उस दिन तो वो पूरा सुबह से शाम तक में सिर्फ विदाई समारोह में बिजी रहता है, चाय खाना, बिस्किट खाना, समोसे खाने में बिजी रहता है और अपना प्रिपरेशन करता रहता है कि ठीक है शाम के टाइम में 5 बजे जब मेरा फेयरवेल फंक्शन होगा उसमें मुझे भाषण क्या देना है, बस से मिलना, इससे मिलना, उस दिन काम ही नहीं करता ना वो. फिर भी इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको मतलब रिटायरमेंट डेट इज 1st जनवरी, बट उसको 31st ही समझते हैं. इसी तरीके से उसको जो एरियर है ना वो नहीं देंगे, डी एरियर या जो भी बेनिफिट है उसको नहीं देंगे. ऐसे 1st जुलाई वाला चक्कर है. अगर 30th को बंदा रिटायर हो रहा है और 1st जुलाई को रिटायर, तो 1st जुलाई वाले बंदे को 30th जून में ही पटक देंगे, उसको पीछे ला देंगे. एनीवे आगे बढ़ो.
जी सर, तो कंक्लूजन पढ़ लेता हूँ. Keeping in view the above statements made by different courts, it is clear that Article 14 gives equal rights without discrimination. It says everyone is equal in the eye of law, whether he belongs to different races, religions, social statuses, or has different, ये तो पढ़ चुके हैं ना, quantities of wealth. पढ़ चुके हैं, राइट? Dr. Jennings rightly said, equality before the law means among equals, the law should be equal and should be equally administered. But and that like should be treated alike. The right to sue and be sued, to prosecute and be prosecuted for the same kind of action should be the same for all citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth, social status, or political influence. The right to equality is one of the most important parts of our constitution, which gives strength to those people who belong to Indian nationality, and it is the necessity of the upcoming generation to secure the right and change developing India into a developed India. फिनिश. तो सर इसमें वही है कि there are certain exceptions always. No blanket applicability is possible in case of any law. एक मनुपुत्रा का आर्टिकल है, थोड़ा सा देखो ये क्या बोल रहा है. जून 2, 2022 का आर्टिकल है. आया जी, आ गया. Article 14 to 18 of the Constitution guarantees the right to equality to every citizen. नीचे छोड़ दो. जी, ये सब कवर कर लिए हमने. The guarantee of equal protection of laws. ये हाँ. अच्छा, कि absence of arbitrary power or supremacy of the law. It means absolute supremacy of the law as opposed to the arbitrary power of the government. Equality and the protection of law. The guarantee of equal protection of laws is similar to that embodied in the 14th Amendment to the American Constitution. It means that subject to equal laws applying to all in the same circumstances. It only means that all persons similarly circumstanced shall be treated alike, both the privileges conferred and liability imposed by the laws. This is very important. Equal law should be applied to all in the same situation, and there should be no discrimination between one person and the other. So same situation is necessary. Similarly circumstanced. The words any person in Article 14 of the Constitution denotes that the guarantee of equal protection of laws is available to any person, which includes any company or association or body of individuals. The protection of Article 14 extends to both citizens and non-citizens alike, and to natural persons as well as legal persons, like company, association, body of individuals, who are legal persons in the eye of law. Exceptions to the rule of law. Equality is, however, not an absolute rule, and there are a number of exceptions. Equality before the law gives powers to private citizens, the same powers as that of public officials. The rule of law does not prevent certain classes of persons. The member of the armed forces are controlled by military laws. Medical practitioners are अभी तक ये था ना, अलग है, उनका कानून एकदम अलग. वहां पर कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो अगर पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ, पर्टिकुलर सेक्स का हूँ, या पर्टिकुलर कलर का हूँ, या पर्टिकुलर रिलीजन का, तो मुझे ले लो. ऐसा कुछ नहीं है, उनके अलग रूल है. Medical practitioners are subject to regulations framed by the Medical Council of India. Article 361 of the Constitution affords an immunity to the President of India and the state governors, because Article 361 provides that the President or the Governor of the state shall not be answerable to any court for exercise and performance of their duties. Today, ministers and other executive bodies are given very wide discretionary powers by statute. Certain members of the society are governed by special rules in their professions, like lawyers, doctors, nurses, army personnel, etc. Inclusion of Article 14. थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको. Certain members of the society are governed by special rules in their professional duties, in discharge of their professional duties. Like Bar Council of India formulates
rules for lawyers. The Medical Council वैसे of इसीलिए India. डिलिबरेटली पूछा कि लायर्स का मतलब क्या है. लायर्स आर गवर्न्ड बाय एडवोकेट एक्ट. So तो Advocate अगर Act and अगर rules मान framed by the लो Bar मैं किसी Council of क्लाइंट India. का केस लेता हूं तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आई शुड विन द केस फॉर हिम. आई विल प्रेजेंट with all my capacity before the court and it is the court has to decide. तो कोई आदमी मेरे को गड़बड़ नहीं कह सकता कि नहीं नहीं तुमने तो प्रॉमिस किया था कि नहीं मैं तुमको जिता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. वो नहीं होगा. अगर इफ आई एम इन्फ्रिंजिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट और आई एम conducting, मतलब I'm conducting not as per the expectation of the court because I am the friend of the court, तो फिर या officer of the court, तो गड़बड़ हो जाएगा. इसी तरीके से डॉक्टर अगर किसी की सर्जरी करता है, किसी का ट्रीटमेंट करता है और उसकी अगर डेथ हो जाती है या उसको कुछ अलग हो जाता है तो he is not liable for prosecuted, isn't it? नर्स का भी ऐसा है ना. If he has taken all precautions before and he has informed the patient. हाँ. तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा कि इसमें यही है कि लॉयर, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड आर्मी एटसेट्रा, पुलिस, आर्मी जो भी है. आर्मी आई, आर्मी को बुलाया गया कि ठीक है कंट्रोल करो द सिचुएशन और उनको बोला ठीक है शूट एट साइड, देखो मारो, 2-4 मर गए तो दे आर नॉट लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी. कि नहीं इनको अंदर डाल दो या जेल में फांसी चढ़ा दो, है ना. जी सर. Then exclusion of Article 14. The scope of right to equality under Article 14 has been considerably restricted by the 42nd Amendment Act 1976. The new Article 31C added by the Amendment Act provides that laws made by the state for implementing the directive principles contained in Class B or C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14. इसमें केस लॉ दिया संजीव कोकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड. तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सब में है. Then Article 359 sub-article 1 provides that where a proclamation of emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move court for the enforcement of such rights confirmed by part except Article 20 and 21 shall remain suspended. Article 14 lays down that the presidents and the governors are exempted from any criminal proceedings during their tenure in office. ये बता दो फिर से पब्लिक को 359(1) फिर से बता दो. Except Article 20 and 21, other fundamental right will be suspended during the course of emergency. 20 is double jeopardy. जी. And 21 is right to life. जी. इसके अलावा बाकी सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे. कोई ये नहीं बोल सकता नहीं मुझे नौकरी में करने दो. अभी जैसे कोविड लगा था, कोविड में गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोविड बाद मतलब जैसे लॉकडाउन लगा था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. तो सारे ऑफिसेज बंद कर दिए थे. तो कोई ये नहीं बोल सकता नहीं मुझे ऑफिस में जाने दो, मेरा बिजनेस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब नहीं उठता. बिल्कुल सर. Those articles, the other articles would have been suspended automatically. Under international law, foreign sovereign and ambassadors enjoy full immunity from any judicial process. ये एक अलग एक्सेप्शन है अंडर इंटरनेशनल लॉ. बहुत गंदा है ये. हाँ, तो कोई दौड़कर मतलब कोई बांग्लादेश हाई कमीशन में घुस जाए या ब्रिटिश हाई कमीशन में घुस जाए और उसको मतलब शरण में ले ले तो दैट पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री. फॉरेन टेरिटरी ना. हाँ, तो कोई अंदर घुसकर उसको निकाल भी नहीं सकता. दैट कंट्री अप्लाइज ओवर देयर ना. ये प्रॉब्लम. जी. कंक्लूजन. Article 14 to 18 is the fundamental rights which says about equality of status, community and gender. This article gives wings to all citizens to put anything in place. That is why Article 14 is an important part of the Constitution. It is the first part of the fundamental rights, that is equality before law. The state shall same चीज repeat कर रहा है. Human rights acts make it illegal to discriminate on a wide range of grounds including sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national
social origin, association with a national minority, property, birth or other status. ठीक है, बंद करता हूँ इसको। जी अब कहाँ जाए? 19 में जी देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं आगे वाला कौन सा, 15 वाला क्या है, 16 वाला क्या है, फिर 19 में पहुंचेंगे। पहले उसको कवर कर लेते हैं। 15 तो हम लोग सर कवर कर दिए वो। फिर भी पढ़ देते हैं ना, ये क्या है। जी मिला? जी The state shall not discriminate any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall, on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, ये or लास्ट any वाला of them पढ़ो, be जो subject. बाद में इंसर्ट किया था, ये पढ़ो, 5 वाला, जी ये वाला। Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, or for the scheduled castes or the scheduled tribes, insofar as such special provisions relate to the admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of Article 30. दादा, यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को, कि ये जो सब आर्टिकल 4 है 15 का और 5 है, इसके पहले 1 and 2 लिखा हुआ है, 1 and 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि these two articles have been inserted by the way of amendment. They were not in the original constitution. जी जी जी। और ये जो 1 and 2 लिखा हुआ है, ये नीचे कहीं पर भी इसके बारे में नोट लिखा होगा कि क्या है ये। ओके जी, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, added by the Constitution First Amendment Act 51. And 2 is inserted by Constitution 93rd Amendment 2005 with effect from 20 January 2006. हाँ, तो जिनको ये देखना है कि अरे ये क्या है, ये 1 and 2 क्यों लिखा हुआ है, that is subsequent amendment. Original Constitution में नहीं था ये। 16(1) sub article 1, there should be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Sub article 2 of 16, no citizen shall, on the grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or be discriminated against in respect of any employment or office under the state. 15 में बता रहा sub article 3, nothing in this article shall prevent the parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government. फिर देखिए यहाँ पे बनाया, that means something has been done, मतलब the original constitution has बeen tinkered with, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। हाँ, under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. बता, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, जहां से शुरू हो रहा है, जहां से बंद हो रहा है, some other phrase or word would have been there in the original constitution, उसकी जगह ये substitute हुआ है। जी। Nothing in this article shall prevent the state from making any 4 में बता रहा, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of in matters of promotion. हाँ, पब्लिक को बड़ी तकलीफ होती है ना कि सब लॉ ऑफ इक्वलिटी है, ये है वो है, तो क्यों फिर रिजर्वेशन होता है, क्यों प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है, क्यों प्रमोशन होता है, यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं वो लोग। देयर इज अ प्रोविजन इन दिस, और 4A में तो फिर से अमेंड कर दिया। हाँ, तो from nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in the services under the state in favor of the scheduled castes and the scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services of the state. भाई साहब, डिपार्टमेंट में हालत ये होती है, मेरा जो जूनियर बंदा होता है ना, 4 साल जूनियर होता है, वो भी ऊपर चला जाता है, आगे निकल जाता है और सीनियर, लेकिन ये लोगों के लिए एक्सेप्शन है।
प्रमोशन भी जल्दी होता है, बाकी तो बेनिफिट लेते ही लेते हैं। खैर जाने दो, उसके बारे में ज्यादा बोलने हाँ, तो merit is never taken into consideration, sadly. And that's why the quality of the administration is going down day by day. Crude. अब इसमें भी देखिए इंसर्शन है, ये नेक्स्ट वाला 4B, nothing in this article shall prevent the state. में दो इंसर्शन है सर। हाँ, दो है तो इंसर्ट हुआ ही हुआ है, उसके बाद में हाँ, इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन करके इसको फिर इंसर्ट किया है। हाँ, दो पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में फिर किया है। 4B में nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved from being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. इसमें तो बहुत कुछ घुसा दिया है। मतलब एक साल में यदि नहीं होता है, पढ़ो किसने किया है, पहले तो ये देखो किसने किया है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट, ये तो जवाहरलाल नेहरू किया हुआ है। देन सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन 75th in 95, that means it was Narasimha Rao जी। थर्ड नरसिम्हा राव 95, 7th 95, 77th है एक, 77th अमेंडमेंट 2 वाला 95 ना, मैं 95 की बात कर रहा हूँ। 95 मतलब हाँ 95 का ही है, 95 का ही है। हाँ, फिर ये बोल रहा है सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001। हाँ, ये भी वही है, नरसिम्हा राव साहब है। हाँ, वो भी 95 का ही है, 17/6/1995। And this is फिर कॉन्स्टिट्यूशन 2000। हाँ, ये 2000 वाला जो है फोर्थ, हाँ फोर्थ यहाँ पर तो ये भी तो भयानक है सर। because it has been inserted because of the Supreme Court judgment ना। हाँ, तो मतलब वैकेंसी एक साल में यदि फिलअप नहीं होता है, as a separate class to be filled up and in the succeeding year, such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. आगे स्पिल कर जाएगी कह रहे वो, है ना? जी जी, ठीक है। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or हाँ, 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. तो incumbent मतलब जो post hold कर रहा है ऑफिस का, तो he is connected with the affairs of religion or denominational institution as a member of the governing body. So nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of the shall be a person professing a particular religion, मतलब दूसरा religion का भी हो सकता है, और belonging to a particular denomination. अरे वो आंध्र प्रदेश ने किया ना, वो रेड्डी ने, कौन है वो अपना जो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, उसने वो तिरुमला के जो वो है ना वहाँ का, हाँ, वहाँ पर उसने मुसलमान को बनाया ना वहाँ का वो। तो यहाँ भी तो वही हाल है, फिर हमारे यहाँ भी तो ये वही हाल है। चलो जाने दो अभी। 17 untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. ये ठीक है। No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. ये भी ठीक है। 18(1) का 18(2) no citizen of India shall accept any title from any foreign state. This is important. फिर नीचे 3 जी
यहाँ बोल रहा है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. Now, if Dhoni and Sachin Tendulkar are conferred the title sir, तो वो नहीं कर सकते ना उसको. गवर्नमेंट परमिशन देगी तब होगा. सर विवियन रिचर्ड किधर लिखा है? एक्सेप्शन तो है ही नहीं इसमें. एक्सेप्शन नहीं दिया है. किधर है? यहाँ तो एक्सेप्शन का बात लिखा नहीं है. बात तो सही है आपका. नहीं, दैट्स वाई सचिन मैं बोल रहा हूँ कि सर विवियन रिचर्ड बोल रहे हैं ना, वहां पे जमाइका वाले को तो बोल रहे हो वो सर ब्रॉडमैन की बात करता है, लेकिन सर सचिन तेंदुलकर नहीं बोल रहा है ना. दैट मींस दे हैव नॉट बीन गिवन. अच्छा, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बहुत जगह जो है टाइटल दिया गया है. फ्रांस से, मतलब अरब रिपब्लिक से, लेकिन वो तो लिखते नहीं है उसे. मे बी बिकॉज ऑफ दिस the title may be conferred, but he will not, I mean, use that title. सोनिया गांधी को मारा है. No person. जी सर. सोनिया गांधी को यहाँ पे मारा है. पढ़ो जी. Number 3, sub article 3 में बोल रहा है no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. यहाँ देखिए नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है. नो पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profit or trust under now the this state. has been extended up to not a citizen of India means what? By birth. अगर इटली की बंदी ने बाद में भी सिटीजनशिप ले लिया है तो सीन वहां पे घुमा करके अब्दुल कलाम ने उनको without the consent of the president cannot. आगे चलो. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign state. Present emolument मतलब पैसा. एक मिनट तो रवीश कुमार को प्रेसिडेंट ने वो दिया होगा कि जाकर के तुम रमन मैगसा से अवार्ड ले लो, पैसा ले लो. या अरविंद केजरीवाल को दिया होगा. लेकिन यहाँ तो बोल रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट. ठीक है, एनी गिफ्ट, एमोल्यूमेंट मतलब पैसा, और ऑफिस. मैं सवाल जानबूझ के उठा रहा हूँ बिकॉज़ द आंसर शुड बी दैट दे वर नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट. मींस अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं कहीं पर और उनको कुछ प्राइज वाइज मिलता है तो ही विल take accept that prize only with the consent of the president, isn't it? जी जी. Yeah, for that matter, any minister for that matter, or any MP or any government official. जी. अब इसको छोड़ देते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम को बाद में करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? राइट टू इक्वालिटी जनरल की बात कर लिया हम लोग. जनरल ना, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. नाउ वी विल कवर राइट ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट में. 1 घंटा हो गया सर. जी 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 जी. इसको देते हैं छोड़. अगर ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करें जिससे कि हम लोग आगे वाली स्ट्रीम को और अच्छी तरीके से बता सके. बट नेक्स्ट स्ट्रीम फ्राइडे को होगी, सेम टाइम पर होगी, मतलब इंडिया टाइम के हिसाब से 8 बजे होगी, और उसमें हम राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे. राइट ऑफ फ्रीडम 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में काफी कुछ चलता रहता है. कोर्ट में भी जजमेंट जाते हैं. और इसके बाद में फिर आर्टिकल 20 देख लीजिए क्या आ रहा है. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. डबल से बड़ी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ. और 21 की बात करेंगे फिर. तो जहां तक हो सकेगा हम वहां तक लेके जाएंगे. फिर राइट ऑफ रिलीजन की बात आएगी जब, तो हम यहाँ पे देखो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे चल रहा है, वहां पे चले जाएंगे. ठीक है जी. 19 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए समय भी थोड़ा लग जाएगा. यस. सो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीम में आर्टिकल 19 को कवर करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो 19 अगर खत्म नहीं होता है तो 19 में रखेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो हम आगे जाएंगे.
फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को इस स्ट्रीम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मजूमदार सर दादा आपको को भी भी बहुत बहुत काफी धन्यवाद सर। हम लोगों का भी ज्ञान थोड़ा सा, क्योंकि मतलब बढ़ना चाहिए। आप लोग कमेंट करें, आपको कुछ भी अगर क्वेरी है तो कमेंट करें, हम लोग उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। नोबडी इज परफेक्ट। थोड़ा सा जी अगर आपका भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा एब्सोल्युटली। और कमेंट मिलेंगे, और इधर चैट में भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसके बारे में हम जवाब दे सकते हैं। स्ट्रीम देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए आप सबको जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सबको। सब लोग जय लाइक भारत। करें, सब्सक्राइब करें हाँ, और जय हिंद। बेल आइकन को दबाएं जब नहीं ताकि नहीं, आपको मैं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मधुकर, मैं सोचता हूँ कि ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तुम्हारे को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो नहीं करो, हम तुम्हारे से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने तो उसको इसलिए मैं जी बंद सर, करके रखा हुआ है। अगर हम बिकॉज हमारा दिस इज एन कंटेंट आपको अच्छा एजुकेशनल लगता है, स्ट्रीम। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज के बाद में मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि हाँ मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जी सर। But that is a sort of begging. मुझे begging नहीं करनी किसी से। I'm not जी जी interested in making money out of this stream. I'm only डेफिनेटली doing a सर। social service. That's it. थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक चलो, यू सर। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत वंदे मातरम। मातरम, भारत माता की जय। अब हम लोग मिलते हैं कितने बजे? 10 फ्राइडे बजे। को। आज वाला दूसरा स्ट्रीम हाँ हाँ हाँ। कितने बजे? 10:30, 10 बजे ना? 10 बजे। 10 बजे, 10 बजे है। ठीक है, 1 घंटे बाद। ठीक है, आप जी सर। खाना वाना खा लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, कॉफी जी पी सर। लीजिए, और मैं बोल जी नहीं सकता और क्या पीना है वो भी पी लीजिए, चलता है? ठीक नहीं नहीं, और तो कुछ पीता नहीं हो सर। है। मैं नींबू पानी की बात कर रहा हूँ, गर्मी चल रही है हाँ इसलिए। वो तो पीता हूँ बिल्कुल। चिकन जी पी लो। ठीक है, चलो बाय। जी 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 जी।